ये बाहर जाके फैसिनेशन बहुत लगता है कि अब्रॉड जाएंगे, एक्सपोजर लेंगे, लेकिन बिलीव मी दोज वर द हार्डेस्ट डेज. आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते किसको? इज इट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर? इज इट क्लीन रोड्स? इज इट गुड हेल्थ केयर? दैट इज वॉट यू डिफाइन एज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ? Probably my definition for quality of life was an IT industry, the only asset that they have is their people. I always say every IT company gets bankrupt in the night. Money matters, passion matters, or both. Very soon that era is going to hit in when people's net worth is not going to be talk about the millions that you have in your bank account. Hello everyone, welcome to HR Scoop. अगर मैं मेरी बात करूं HR को लेके, जब भी मेरे दिमाग में किसी विमेन लीडर HR, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंदौर का इमेज आता है, तो इनके अलावा मेरे दिमाग में किसी और का नाम नहीं आता. I met her in 2015 at one of the event, and since then she was my dream HR women leader. So she is going to be the first women leader ऑन HR Scoop. सो आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड काफ़ी डिफरेंट होने वाला है हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम आज इसमें बात करेंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल अलॉन्ग विद कनुप्रिया. सो कनुप्रिया, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपकी जर्नी से करेंगे. Thank you so much, Deepika, for inviting in. So, as you know me already, so myself, Dr. Kanupriya Manchanda, I am a passionate, spiritually driven HR scholar. I started my journey professionally back in 2005 with Elder Pharmaceuticals, Navi Mumbai, and then we moved to Australia, and that's where I was working with Coles Group in learning and development. And for the last 15 years, I'm now working with InfoBeans as Vice President People. So when I joined InfoBeans in 2008, we were 80 people, and today we are 1600. So I am heading the talent entire HR vertical across the globe for 4 countries in 10 locations. Wow. We're covering across, and the journey involves in HR covering from talent acquisition to organization development, change management, mergers and acquisitions, and what is very close to my heart is building the culture of the organization. I started my journey, I was been throughout my life a backbencher. कभी पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया मैंने, बट अगेन a turn came in when I was 17 years. I lost my dad and I realized कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, you have to earn your own living. My mom has been my inspiration. I being the only child always used to feel कि यार कैसे करेंगे या क्या करेंगे. That's where turned the table, studied very hard, and I topped my university with bachelor's in pharmacy. So, yes, I see your reaction. Yes, pharmacy and HR. 2 different streams. And my first job with Elder Pharmaceuticals, Mumbai, within 6 months समझ में आ गया था यार ये दवाइयों के साथ तो नहीं रह पाएंगे, फार्मेसी तो नहीं हो पाएगी. And that's when I think the most bold decision of my life. I probably had to park the entire pharmacy and take a U-turn, and I decided to switch my career into HR as an area. So pretty much like a typical Punjabi family, I got married when I was 22 years old. So probably the first one in my college and the school group to get married to and move to Australia, which was pretty much like an extended honeymoon for 3 years. Those were the days where I thoroughly enjoyed and were the most hectic years of my life. ये बाहर जाके फैसिनेशन बहुत लगता है कि अब्रॉड जाएंगे, एक्सपोजर लेंगे, लेकिन बिलीव मी दोज वर द हार्डेस्ट डेज. I used to start at 7 a.m. from my home, change 2 trains, reach to work by 8 o'clock, 8 to 5 का job, again change back 2 trains, come back, do the uni from 6 to 9, and 9 o'clock जाके घर में खाना बनता था. And यहाँ पे हमें लग्जरी होती है 3 course meals. Melbourne, we pretty much used to get the same meal cooked, and that's your lunch and dinner both. तो lunch का टिफिन पहले पैक होता था, उसके बाद डिनर खाते थे. But that is where I think actually shaped me. That hard work, that drill that you go through is actually nurtured and transformed me into, I would say, a professional. But why, while studying, you was working at Australia?
यार डॉलर का खर्चा डॉलर की कमाई से ही निकलता है. Again, as I said, middle class family, so had loans and wanted to make sure that MBA खत्म होने के बाद दिमाग पे इतना लोड नहीं हो कि इतना ज़्यादा एलिमेंट हो. So both me and my husband were working around. ओके ओके. मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कूल कल्चर है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अलाउड टू हैव बियर इन द क्लास. इज इट? इट इज़ एक्चुअली, जैसे हमारे यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स में कोल्ड ड्रिंक के कैंस रखे रहते हैं ना, वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स में बियर रहती है एंड इट इज़ ऑल फ्री. वन ऑफ माई बिगेस्ट change was the first group meeting that we had, the entire group, so we were 6 of us, 5 were from Australia and I was the only Indian. They said, okay, let's catch up at the pub at 9 o'clock after class. And I was like, okay, so matlab, it's a group study, it's a brainstorming that we need to do on the project and we're catching up in a pub. How is it possible? So that is where it was, and it was a cultural shock. You have to adapt to it, right? So again, I being a teetotaler, right, everybody ordered beer. To get into pace, it was difficult to go back and say कि यार नहीं मैं पीती नहीं हूँ, right? So that is, and then but that is where you gain your own courage, your confidence and your substance at work. I think that gives you space. And then हमारी group का तकिया कलाम हो गया था, beer for all and one coke. Good one. So why you took this decision to come back from Australia to India? Very, very interesting. And I still feel that is the best decision I took in my life. And to make it worsen for people here, we also got our permanent residency. So a lot of friends of ours used to say, तुम्हें PR मिल गई है ना, इसलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं हो रही है. And but for me it was a very important question यार, आप quality of life बोलते किसको? Is it good infrastructure? Is it clean roads? Is it good health care? That is what you define as a quality of life? Probably my definition for quality of life was when I am close to people I love. Wow. When I'm close to the culture that I am in. When I'm able to spend time on my spiritual environment. So being volunteer at Radha Swami Satsang for last 20 years, I've realized if you cannot be there for your family, who else would you give it back to? Wow. And that's when we decided कि अगर वापस चलना ही है तो 3 साल में ही चलो, वरना जाना और मुश्किल हो जाएगा. Cool. I mean that's really so important. So you are like family oriented, Hardcore. or maybe pampered child. हाँ, so I am the only child. Oh, wow. I don't have any siblings. My husband's the only son. हमने कोशिश की थी genuinely कि parents को बुलाएं, but parents, it was very hard for them to adjust. And I would say it feel really blessed that we are 4 generations living in the same house. So I would say, जैसे कहते हैं ना कि हर successful मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे I strongly feel that the success behind me is my support system, my family, my husband is that kind of a pillar उसके अगर ये खड़े हैं ना तो कोई भी जंग जीत आएंगे. So that confidence is what you get in. Wow. Wow. Super. So Kanupriya, आप इतने टाइम से IT इंडस्ट्री में हो, like more than 15 years. And how do you manage this? I mean, जब भी मेरे brain ऐसे ही रीड करता है, IT इंडस्ट्री की बात आती है और वर्क लाइफ बैलेंस मुझे हिट करता है. सो बीइंग एन मदर, वाइफ एंड वाइस प्रेसिडेंट एट InfoBeans, so that's again so difficult to manage all those things. I mean, how do you like वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हो आप? आई थिंक बहुत ट्रू क्वेश्चन है और मैं ऑनेस्ट कन्फेशन बोलूँगी, आसान भी नहीं है. इट टेक्स अ लिटिल कॉन्शियस एफर्ट, बट इतना मुश्किल भी नहीं है. बहुत ज़रूरी लगता है मुझे दीपिका ये समझना कि हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते किसको हैं. मैं शाम को 6 बजे घर आ जाती हूँ, ये वर्क लाइफ बैलेंस है. मैं फैमिली के साथ छुट्टियों पे जा सकती हूँ, ये वर्क लाइफ बैलेंस है. या फिर मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस वो है कि मुझे सुबह 9 बजे जॉब पे जाने के लिए एंजाइटी नहीं हो रही है. मैं रात को 9 बजे खुशी खुशी घर वापस आ रही हूँ. आई एम इंजॉइंग वॉट आई एम ट्राइंग टू डू अबाउट. So I believe work-life balance is not कि 50% time work को दे रहे हो, 50% life को दे रहे हो. Correct. I feel work-life balance is that rhythm, a daily rhythm that you have to set between the expectations from work as well as from home, the boundaries that you define
that this is what my niche is, right? And then trying to understand and see that how you can balance between those things. True. तो हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, मुझे लगता है. वर्क लाइफ बैलेंस की बाउंड्रीज कोविड के बाद ना और बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई हैं. ट्रू. इट इज़ वर्क फॉर होम हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है एक्चुअली. बट आई थिंक अगर आपका माइंडसेट सही है और आपको लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो अपने काम को, तो आप हर चीज़ का समय निकाल सकते हो. ओके. बट जैसे आप पूछ रहे थे, मुझे लगता है कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ती हैं कि हम कैसे इस टास्क को बैलेंस कर सकें. वर्क लाइफ बैलेंस मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगेगा. आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें डेलीगेट करनी पड़ेंगी, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैंने तो इसको मिथ मान के छोड़ दिया है. दैट डजंट एग्जिस्ट. अगर डजंट एग्जिस्ट होता तो आप मतलब खुद की पूरी एजेंसी चलाने के बाद सच 10 years ऑफ ग्लोरियस करियर अहेड एंड नाउ अ पॉडकास्ट चैनल. लाइक दिस इज बिकॉज यू लव व्हाट यू डू, सो यू ऑटोमेटिकली क्रिएट दैट टाइम फॉर इट. Agree to it, but still it's too tough being a mother, and it's really tough. So I really wanted to understand from you, and that you beautifully defined work life balance, and definitely I'll apply to this my life. So Kanupriya, एक और मेरा question है कि job stability को लेके, though it is not for you because you're already completed like 15 years, in more than 15 years I guess. Yes. So with Blessed to be a teenager at InfoBeans now. Wow. Great. So like 15 years at InfoBeans, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है. बट येस, बीइंग एन रिक्रूटमेंट कंपनी, हमसे जो रिक्रूटर्स पूछते हैं, दे आस्क फॉर मिनिमम 2 years 3 years स्टेबिलिटी, एंड जॉब स्टेबिलिटी है ही नहीं. वी डोंट फील लाइक 10 साल के करियर में लोग 15 4 5 जॉब स्विच करके बैठे हुए हैं. सो ये क्या है आईटी इंडस्ट्री में, ये इतना मेस्ड अप क्यों है? See, no doubt, attrition is at its peak when it comes to IT, right? But मुझे लगता है जॉब आप तब तक कर रहे होते हो जब एक विन विन सिचुएशन बनती है. अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम एन एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव, where both the parties feel that they are valued. Correct. Where they feel they are heard, where they feel they are growing. As an organization would grow only when its people will grow, right? And IT industry, the only asset that they have is their people. I always say every IT company gets bankrupt in the night because लोग तो घर चले जाते हैं. अगर वो कल सुबह वापस नहीं आए, then what? Wow. You try to create that environment, that psychological safe workplace that everybody is able to give their best. But ये करने के लिए अगर आपको स्टेबिलिटी के एंगल से वो सुबह फीलिंग आए कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा, बोर्ड फील होने लगे, अगर सुबह जॉब पे जाने के पहले एंजाइटी आने लगे, आई थिंक दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड थिंक क्या मुझे जॉब चेंज करना है. Wow. बट अगर आपको ग्रोथ मिल रही है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर आपको डिफरेंट वैल्यू फील हो रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं करने के लिए, तो फिर क्यों चेंज करना? एंड आई कैन टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग अ लॉन्ग टर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता होता है यहाँ काम कैसे होगा. इट बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू. करेक्ट. ये आपने बहुत सही बात बोली, एंड आई अग्री टू इट बिकॉज आई ऑल्सो सर्व लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड दैट टू सेम इंडस्ट्री. सो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है चीज़ें करना. यस. एंड एज पर योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी फॉर एन स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स? देखो, दोनों एंगल से देखना पड़ेगा. एम्प्लॉयर की तरफ से के एंगल से देखो तो मिनिमम 5 साल तो रुकना ही चाहिए. एम्प्लॉय के एंगल से देखो, जब तक मुझे हर साल 40% हाइक मिल रहा है, मैं स्टेबल हूँ. This is not possible, no? Every year 40% is too much. Exactly, and that is where the reality check happens in.
राइट. सो अगर एक ब्रॉड लैंडस्केप पे देखें, पीपल स्टार्ट वर्किंग एट एन एज ऑफ 20 एंड दे वर्क टिल द एज ऑफ 60. So 40 years is your work span that you get into, and spreading it across at least not more than 10 companies, which is a broad ballpark number in your career. So on an average, at least anything between 3 to 4 years in a company is what is looking out as a standard. और ये पता है आपको शायद इनिशियल स्टेजेस ऑफ आपके करियर में पता नहीं चलेगा, लेकिन द मोमेंट वी गो फॉर हायरिंग अ डायरेक्टर लेवल पर्सन और अ वीपी लेवल पर्सन, द पर्सन हैज स्विच टू एवरी 2 years ऑन अ जॉब, ट्रस्ट मी वो प्रोफाइल स्क्रीन रिजेक्ट हो जाती है, इंटरव्यू तक शेड्यूल नहीं होता, बिकॉज एट द एंड यू आर लुकिंग इज द पर्सन कमिटेड एंड डज द पर्सन हैज अ कॉमन पर्पस और अ गोल अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाट मैटर्स फॉर पीपल, आई मीन आपने अभी तक क्या देखा है लोगों के लिए? मनी मैटर्स, पैशन मैटर्स, और बोथ? आई थिंक कई बार ना ये डिपेंड करता है कि आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन आप पे भारी है या राइट साइड भारी है. लॉजिक एंड इमोशनल. Yes, exactly. But for all long-term reasons, I would say, I'll be very genuine here and saying, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे तो कभी आप जब अपने कॉलेज कलीग से मिलते हो, अच्छा तू अभी भी इन्फोबीन्स में ही है. So it used to come out as a sarcasm, right? But when you look at it as a long-term career growth, you see that you are in a much better position. You have a much more authority. You have much more decision making, and then you are being valued in the organization, and you are not worried that if you fail, you will be questioned. तो मेरे एंगल से अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ द पैशन दैट ड्राइव्स इन. मनी आपको जो भी मिलती है ना, वो मोटिवेशन फैक्टर रहता है फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months दैट व्हेन यू गेट योर सैलरी. आफ्टर दैट मनी बिकम्स हाइजीन. सैलरी तो आ ही रही है. What matters is the work that you are doing. True. What matters is the people around that you are working with, the boss that you are reporting to. And if you are enjoying the work that you are doing, आप बाकी सब काम के लिए रास्ते निकाल लेते हो. मैं वापस रिपीट करूँगी शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुबह 9 बजे उठ के एंजाइटी हो ना, अगर घबराहट हो, अगर मन नहीं करे ऑफिस जाने का, और रात को 9 बजे लगे प्लीज़ मैं घर चली जाऊँ किसी भी हाल में, दैट इज़ एन ए टाइम वेयर यू शुड थिंक यू आर एक्चुअली यू शुड टेक अ चेंज. बिकॉज अगर आप अनहैप्पी हो, अगर आप खुश नहीं जा सकते हो घर, तो आप दोनों के साथ इनजस्टिस कर रहे हो. अपने एम्प्लॉयर के साथ तो कर ही रहे हो, उससे ज़्यादा बड़ा इनजस्टिस अपने खुद के साथ कर रहे हो. Because we spend 80% of our wake time, our active time at work. हम घर जाके तो सो जाते हैं. करेक्ट. और अगर हमें वही करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होता. बट इसी के साथ मुझे लगता है पीपल सेंसिटिविटी के अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 90% लोग तो सिर्फ मजबूरी में ही काम कर रहे हैं. मजबूरी में या गांधी जी के लिए काम कर रहे हैं. यस, कह सकते हो आप. हाँ, बिल्कुल कह सकते हो. और ये जो आपका फैक्टर है ना कि हम ये फील करें कि मैं मजबूरी में काम कर रहा हूँ, तो हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम आ जाती है, हमें और दिक्कत आने लगती है. बट इफ़ यू फील दैट आई एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस, आई विल फाइंड वेज टू डू इट. इफ़ यू लुक, पीपल कॉन्ट्रीब्यूट सो एक्सटेंसिवली टू NGOs. क्यों? क्योंकि उनको वो करके सेटिस्फैक्शन मिलता है. जो मैस्लोज हायरार्की है ना, जब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हिट होने लगता है, आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट रियली एंजॉयिंग योर वर्क. सो ट्रू. आईटी में मुझे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, बट एक जेंडर बायसनेस, मतलब इट्स ऑलरेडी एज पर द नंबर्स इट इज़ ऑलमोस्ट 34% डाइवर्सिटी. आई डोंट नो द इन्फोबीन्स, बट येस यू आर देयर. इट मस्ट बी अ गुड डाइवर्सिटी, मस्ट बी देयर. सो ये एग्जिस्ट करती है जेंडर बायसनेस? आई वुड से डिपेंड करता है कि अभी जैसे फिलहाल देखूँ तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ जेंडर बायसनेस है ऑन हियर इन द स्टूडियो रूम. बट ओवरऑल आई वुड से इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन. जैसे HR बोलूँगी तो वो नेगेटिवली जेंडर मतलब अगर नेगेटिव इसलिए बोलूँगी कि HR एज अ फंक्शन हैज़ मोर फीमेल मेम्बर्स, सो हमें लगता है कि वो उस तरीके से बायस्ड है. बट व्हेन वी लुक एट अदर और कॉर्पोरेट्स, आई थिंक
women empowerment, the way it is taking shape in India and the way the opportunities are curated, there is a lot of value जो diversity लेके आती है, and companies are consciously investing in it. InfoBeans में हम एक program चलाते हैं which is Shakti, which is purely focusing on women empowerment. Okay. And to my surprise, there were no problems कि यार मुझे घर से permission नहीं मिलती या my in-laws doesn't allow me to work or I have some inhibitions, वो problem नहीं है. The main element here is on the mindset. The women do not really had that fire कि मैं आगे जाके निकलूँ. True. And that's They- a them- major problem, I guess. They're self-contented what I am doing, where I am doing. अगर मैं घर भी मैनेज कर रही हूँ, शादीशुदा हो गई हूँ, and I'm good at an SS senior software engineer level, why do I aspire for a project lead? I'm doing happy. But वो fire is the only element. But gender diversity, I think, brings a lot of value add that comes to HR as a profession, and HR as the catalyst who brings gender diversity across. And I would say not just gender diversity in terms of the racial background that people comes in, the LGBTQ communities that they get access to. People bring in a very different perspective on the table. So it is something which is definitely a need of the hour. करेक्ट. बट मैंने एक क्वेश्चन, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक कैंपेन रन किया था, आस्क मी एनीथिंग. सो वन गाय हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, why HR, you know, do you think, because being an HR, he asked this question, why this HR field is only, you know, women oriented? So I really don't agree to it, because because I come from manufacturing industry, and when I see in Pithampur area or maybe other industrial area, there are 50% ratio, and even male HRs are more comparatively women. So I still doubt, like as you said, women are more into HR. Is it true? I would say it is slightly skewed. मैं 50-50, at least from the where I am seeing, I don't see it 50-50. It is somewhere between like 65-35 kind of a ratio where it falls in. Basically एक HR का angle भी देखें ना, तो HR is a very compassionate role that comes into. From a psychological perspective, it fits well. Company में कोई भी good news हो या bad news हो, वो HR से ही बाहर आती है, right? Right. तो इसलिए शायद एक somehow एक psychological, जैसे होता है ना कि घर में कोई भी good news या bad news होती है तो अपन हमेशा बोलते हैं घर की मम्मी को बुलाएंगे या अपनी दीदी को आगे कर देते हैं. It is that psychological mental makeup that probably gets in. And I think industry also makes a difference. Absolutely, Depends. It does. Yes. So IT, how many members in your team, if you just can share, like? So if I overall look at it, InfoBeans overall as an organization. No, only in your team, like. Okay, HR. So HR, I would say from a gender bias perspective, we are 25% boys. Good numbers. Good numbers. Yeah. So what is this IT is called, like cool culture, and आप लोग ये क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत है cool culture बनाने का, and why you're doing it? तो I would say IT में only a set जो बात होती है people है, and especially the Gen Z that you get in millennials, you try to get almost anything and everything that they need in the system, right, to be available, ताकि वो अगर कोई distract भी हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो वो ऑफिस के environment के engaged रहें. जो ये cool culture वाला concept है, this is broadly looking at उनकी entertainment के लिए. So अगर मैं अपने ऑफिस के setup की बात करूँ, so starting from cricket net to pool table, to table tennis, to football, to Xbox, to music room, to meditation area, you have anything and everything, to the extent you also have a nap room. It is, अगर थक गए हो जाओ ऑफिस में जाके सो जाओ. And मैंने वो भी देखा, बड़ा greenery InfoBeans का office, and so beautiful. I mean, so beautiful. Again, thank you so much, but it is like every floor has been made to a different theme. Okay. Because you want to bring variety. You want to feel that your workplace is an area where you would like to come to. Correct. So आपने Gen Z की बात की, इनको हम कुछ, अगर आपके अंदाज में हम इनको कुछ करियर टिप्स देना चाहें तो वो क्या होंगी? Gen Z, I think very important, मतलब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में
इम्पॉर्टेंट IMP जो एग्जाम्स में होते थे ना, IMP क्वेश्चंस, उस सेंस में बोलूँ तो विच जेनजीज आई बिलीव इज वेरी, दे ऑलरेडी फॉलो अ लॉट, विच इज फर्स्ट, द I stands for my own self, I, right? The most important person in your life is you yourself. अगर आप खुश हो तो ही आप दूसरों को खुश कर पाओगे. So always try to upskill yourself, invest in yourself, develop your own self. The M of the advice that goes in is the mindset. We have to make sure that we are there with an open mind. We are not prejudiced with our own biased approach. We are looking forward to have and welcome people with open arms. This mindset plays a very important role. And third is follow your passion. I wasted 4 years of my career doing a bachelor's in pharmacy because I just got an admission in a good school, college at a good rank. And my dad didn't wanted me to go outside Indore. But after 4 years, I realized, and 4.5 years, I took a U-turn, followed my passion, and that's the reason at least I go home happy every single day. So that means you encourage students and working professional to, they can shift their career anytime? I would strongly suggest yes. हम लोग बहुत कई बार सोचने लगते हैं, अरे यार मैं पिछले 4 साल से सेल्स में हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कोई और जॉब मिलेगी नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Organizations are open to invest in cross-train people. You have to upskill yourself, get yourself cross-trained and believe in what you want to do. अगर आपको दिल से वो करने की इच्छा है ना तो आप कर लेते हो. अगर क्रिकेट मैच है ना तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती रात को 2 बजे तक जागने में, बट क्लाइंट का डिलीवरेबल आ जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है. But I mean, ऐसा, if I'll send you some candidate with sales background who wants to apply for a developer role, will you hire him? इंटरव्यू करूंगी, बट इफ द पर्सन इज एबल टू क्रॉस क्लियर द इंटरव्यू लाइन एंड justify the skills within our own organization. There are people who move from quality assurance to development to mobile as a background to a different area now. Our current VP sales was heading delivery earlier. Oh, so because she was passionate about it. okay. Because अगर आपका passion है then you are going to give more than 100%. I agree to this. एंड कनुप्रिया, मैं देखती हूँ मतलब आपने अपनी जो इस ज़बरदस्त लेवल की जो ब्रांडिंग कर रखी है ना, ये इट्स अमेजिंग. ये आदत कहाँ से आई आपको? नहीं ऐसी कोई ज़बरदस्त वाली ब्रांडिंग नहीं है. नहीं, आई विल शेयर एन एग्जाम्पल. आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू अर्लियर, बट 2015 में मैंने आपको एक इवेंट में देखा था, एंड दैट वाज इन HR कॉन्क्लेव एट रेडिसन. And that time I was working with one of the manufacturing company at Pithampur. Right. और आप स्टेज पे भाषण दे रहे थे HR वाले, and that time I was like, oh my God, this is the one to whom I have to follow, because that was the first conclave, very first conclave when I shifted to Indore. I can recall. And it was so powerful, so strong. मतलब मजा आ गया था आपको सुन के, बहुत ही अमेजिंग था. तो 2015 की मैं बात कर रही हूँ. It's almost 8+ years now. Yeah. So 9 years. Yeah. So और ये I think ये अप्रैल मई जून की बात है. So आप उस टाइम पे इतना एक्टिव थे और आज भी आप इतना एक्टिवली एक्टिव हो, कैसे? क्योंकि शायद मुझे HR से प्यार है. बोल सकते हो. I think मुझे लगता है अगर आपको खुद करने से वो मज़ा आता है ना तो आप में वो एनर्जी, वो पैशन खुद डेवलप हो जाता है. जो पर्सनल ब्रांडिंग की बात है, मुझे लगता है जस्ट बी योर ओन सेल्फ, बी ऑथेंटिक. अगर आप, मुझे एक्टिव रहना पसंद है, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, तो यही सेम सिचुएशन होती है अगर हमारी फैमिली भी इकट्ठी हो जाती है ना, तो चलो 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 ताश खेलेंगे, चलो ये करेंगे. सो दैट इज़ विच बिकम्स अ कॉमन एरिया. सो योर पर्सनैलिटी टाइप रिमेन्स द सेम वेदर यू आर एट वर्क
or you are at professional. So understanding what is your locus. अगर मैं गूगल करूं दीपिका तो क्या वन वर्ड आना चाहिए मेरे पास? For me, women empowerment. Right, exactly, that's how I know you. That's how I know you, and that's why we are here, right? So that defining that one locus for your individual is, I believe, helps to build your personal brand. And I would say, more than a brand, it is your own identity. It is what defines you. It is what that you enjoy doing it. So पर्सनल ब्रांडिंग मुझे लगता है इंदौर में आपसे अच्छी तो नहीं कर रहा है कोई भी. आई एम सो श्योर अबाउट इट. इट्स टू गुड. और कई हद तक मैंने आपसे सीखा भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आपने बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे, मतलब स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को कैसे, क्या इम्पोर्टेंस है इसका इनके अराउंड. मीन्स फॉर यू बीइंग एन HR फेस ऑफ द कंपनी, आई अंडरस्टैंड दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग a brand for yourself as well as for the company. But for any random students or working professional, is it important? I would say very important यार. आजकल जो digitalization world आ गया है, your presence on social media is a reflection of who you are. People, there is a minuscule difference between the talent and the skills, right? अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंदौर में 45+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस टीयर वाले, उनमें से इतने स्टूडेंट्स निकलते हैं. व्हाट इज इट दैट सेट्स देम अपार्ट? व्हाट इज इट देयर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, राइट? योर पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प्स यू टू gain trust of people. Your reinforcement helps you to act seen as an influencer, where you talk about the subject, you talk, and it's very important that you be authentic about it. Okay. So it is important for one kind of set of students, maybe for MBA or HR students or anyone. जैसे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, राइट? हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ सेल्स वालों को ज़रूरत है. इट इज़ अ पैकेजिंग, इट इज़ द प्लेटिंग दैट यू पुट टू योर डिश. Correct. Right? How you garnish your dish, how you present it. At the end, it is the taste which will be the matter. It's Correct. your content, your skills are that's going to be matter. But are you creating that first impression? Are you going to be somebody whom you would like to talk to? That is all going to be picked up by your personal branding. बट बच्चों को नहीं पता होता है कैसे करना चाहिए, क्या टिप्स हैं, क्यों करना चाहिए. एंड आई मीन उसका स्क्रैच जीरो से नहीं पता है कि बस रेज्यूमे बना लिया हो गया. अब तो दीपिका ज़माना चला गया है कि रेज्यूमे से हायरिंग होती थी. At senior levels, we hire purely on LinkedIn profiles. When I get an interview profile, with the profile you get the individual's LinkedIn, Instagram, Twitter handle links, because that's where you look at the individual's personality. थैंक गॉड आपने टिंडर प्रोफाइल नहीं बोला. अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है. एंड आई होप सो कभी ना पड़े. यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन तीनों प्रोफाइल्स रेज्यूमे में साथ में आते हैं आपके हाँ, पास. फेसबुक से ज़्यादा ट्विटर अगेन, एंड इंस्टाग्राम गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ डज अ पर्सन स्पेंड्स देयर वीकेंड. Okay. What is it that they like to do? Because at the end of it, you are hiring an individual personality. Okay. And it is very hard for anybody to change, to do it. You would like people to be in your team who follow their hobbies, who spend time on weekends, who love community service. So how do you come to know about it? और interviews में तो क्या होता है ना, everybody is at their own best. Right? That is pretty much a sales pitch that a candidate is doing. Correct. Around. बट उसके लिए उनको क्या करना चाहिए अगर किसी को स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करना है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया. एग्जैक्टली सबसे पहले तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में मैंने देखा है, जब भी मैं कॉलेजेस में एड्रेस करने जाती हूँ स्टूडेंट्स को, काफ़ियों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स ही नहीं बनी होती हैं. वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. LinkedIn profile banana, and then what I predominantly, the common framework in industry which is goes out for personal branding is IARI. Okay. IARI. Okay. Right? So it says first define your identity.
What should be that one word? What is it that sets you apart? And that should come out loud in your profile. Okay. Your content should speak about it. And then A stands for audience. Understand who is the audience that you want to talk about. Is it your future employer? Is it your peers? Is it your family? And there are people who strategize. There is a different content that goes on Instagram. There's a different content that goes on LinkedIn. Correct. Right? So that is where it's important for us to understand. And then R is decide your roadmap. You have to be the same personality online and offline. Right? If you are talking about individual being social, you want to be the women empowerment, or यहाँ पे मैं देखूँ तो when I meet you in person, you are not talking about it, then it will not correlate. So your interpersonal things, the events that you attend, the panel discussions that you attend, what is it that you carry around? And I think very, very easy, but most difficult in this entire space, I believe, is the I of it, which is iterate, consistency. Which you are doing since 2015. I've seen you and still you're doing it. Yes. Thank you so much. And again, it takes you a lot of consistent effort, and you will not get results in the first 2 years, believe me. True. You will have to keep nurturing your own soul, keep sowing, keep watering, and then make sure your tree is going to flourish out. As you said in one of your line recently, it should be same personality. I mean, online and offline. Yes. But I have seen a lot of people, because social media is entirely different and the real world is different. So how you identify like fake versus real? वो कैसे identify करते हो while hiring? I mean, it's very simple for me if I'll put up my professional picture and good quotes and very positive some blogs or something, and then it's showing like very positive personality, and at the time of working, or especially into leadership hiring, because you are hiring leaders. Yes. For your organization, or maybe for different for anybody is hiring, then वो कैसे identify करते हो fake versus real? I think that's the only reason अभी HR का job, after all the AI coming in, is still safe. Because that is where you really need the HR angle to bring in. There are a lot of people where on the job description the profile is an absolute match. The recruiter is bang on, this guy is going to select, and the interview ends up in 10 minutes. Because you realize that it's a different personality altogether. What the person is claiming to be and what it is not there. There are agencies, there are recruiting services where people get their resumes built. So it is very important for us to identify, and that's the reason we have rounds of interviews. That's the reason we meet in person. Especially at a leadership level, there are psychometric assessments, there are inbox simulations where the individual, we try to see how does the person actually behave when a situation arises. So you also ask like some kind of situational questions? I think with the AI, it's a slightly better version of it. We call it inbox simulation. So you're given a story line. This is the organization, a one-pager outlook. This is a company, and you have an interface. Every 3 minutes, a new email hits your inbox, and within 1 hour, you have to respond to 10 emails. Okay. Because people say that psychometric, I think I can fake it. I know how can I do it, but this is like you don't really have time to think. Your on-the-spot reaction is going to come out. And the reason why I do it is, if you hire a person, right, a wrong hire is a very, very heavy mistake on the organization. Because not just for the organization, for the individual career as well. And I think as an HR, we owe a bigger responsibility to back to the community to try and see whatever best. और इसका ऐसा नहीं है कि wrong hires नहीं होते. The earlier you get to know about it is, the better it is for the interest of both the parties to depart ways. Okay. कोई ऐसा experience है आपका wrong hiring? If you can share. एक हो तो बताओ, बहुत सारे.
I again very genuinely sharing. It's not कि एक wrong hire या दो wrong hire. Nobody can perform 365 days. There are areas where you make wrong decisions. I think the courage lies in accept that yes, I made a wrong decision, correct it and take the next steps. सुपर. एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है लोगों को अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग. स्पेशली स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को उनको लगता है हम नेटवर्किंग तो कर रहे हैं ना, सो क्या ज़रूरत है पर्सनल ब्रांडिंग की, ऐसे हमें लोग जान जाएंगे. मुझे ना बहुत सही लगता था, एक बहुत पुराना कोट है व्हेन आई रीड अबाउट इज नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट आप कितने लोगों से जाके मिलते हो. नेटवर्किंग इज हाउ मेनी पीपल कम टू मीट यू. वाओ. योर नेटवर्किंग इज योर नेट वर्थ that you bring in. True. I think very soon that era is going to hit in when people's net worth is not going to be talk about the millions that you have in your bank account. It is going to be talked about how many trees is what that you have planted about. Your net worth is going to be how many people do you know and how many people know you as an individual. So Wow. I think that networking is and I think कई बार ना बहुत हम ROI ढूंढते हैं without all the networking events. अरे मैं जाने का फ़ायदा क्या हुआ यार, I probably going to spend my entire Saturday on doing for an event. क्या फ़ायदा है जाने का यार, कुछ नहीं होने वाला, अभी मुझे जॉब स्विच नहीं करनी, राइट 2 साल बाद करनी होगी तब देखूंगा. Right? But that is where it has to be a genuine effort and an attempt. You cannot, and you will probably, at least I know I can never measure an ROI of a networking event. But you feel very valued and connected when something that you did in 2015 and you still have a positive impact. We never thought doing it at that Correct. point in time. And you're doing networking like globally. I have seen a lot of forums, and so do you feel what kind of benefits comes in? I think a lot of it, and it is not just on your personal side, it helps you to perform at your work better. At probably 20 years of experience, what is that you learn from? The best learning happens from peer learning, the community that you work in. So when you go and attend these conferences, when you attend these networking events, you actually get real hands-on कि आपके पास problem आई तो आपने उसे कैसे solve किया. People are calling off from office, but office बुलाने की क्या strategies अपनाई? What are other organizations doing about it? Learning from each other and also seeing this is not the situation in your organization today, but it can happen tomorrow. Correct. So it helps you to upskill, it helps you to build connections, it helps you to stay relevant in the industry. Very nice. So do you consider like if I mean it happens with many working professionals or students वो introvert होते हैं, मतलब they cannot talk in front of the community, but they are very good at maybe at work. Absolutely. Performance. So उनको networking के क्या tips दे सकते हो आप? वो कैसे networking करें, वो कैसे अपना personal brand बनाएं? Again ये बहुत बड़ा myth है मुझे लगता है दीपिका कि networking उन्हीं की अच्छी होती है जो extrovert personalities होते हैं. Networking is about building that relationship, that genuinity, that authenticity in a relationship. और जो लोग members शायद introvert होते हैं, जो अपने end पे अपने को ऐसा लगता है कि वो connect नहीं feel कर पा रहे या वो कैसे बात करेंगे या वो shy हैं, उनके जो bonds बनते हैं ना, they are going to last for a much longer duration and they go much deeper. I think हम इंट्रोवर्ट्स में या नेटवर्किंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि वी फियर टू मेक आवर सेल्फ वल्नरेबल. वी फियर कि यार मैं क्या जाके बात करूँ या और प्रोबेबली आवर ईगो गेट्स इन बिटवीन. व्हाई शुड आई गो एंड टॉक टू अ स्ट्रेंजर? बट इफ यू अगेन दैट इम्पैक्ट विल हैपन वंस यू सी द वैल्यू इन इट. व्हाट्स इन फॉर मी if I go and build more relations, what's in for me? So that I guess helps us to build it.
एंड नेटवर्किंग के लिए ना मुझे चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं. फर्स्ट इज हैविंग दैट इनहेरेंट क्यूरियोसिटी to know what's happening, to know क्या करना है. I want to understand this person. I want to see how do they go ahead about doing it. Second is courage. It needs courage to actually go back and see and speak to somebody. Actually, it requires. And then establish that connect with that person. Correct. So courage, confidence, connect and curiosity, I would say, makes networking all worth it. So you say like for personal branding and networking is important for everyone, whether you're a student or working professionals, anything. Absolutely. I believe क्योंकि आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आपका जो सोशल मीडिया है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. आपको जॉब स्विच करनी है नहीं करनी है डजेंट मैटर. आपको अपस्किल करना है अपने नहीं में, आई एम वेरी वेल कंटेंटेड, आई एम ऑल ओके, आई एम गुड. But you always keep yourself well groomed, right? You, whenever you are going, you would like to look your presence, you make yourself presentable appearing. Your personal branding on social media today is your virtual appearance. Yes. But still there is very thin line, you know, between virtual world and the offline workplace. So उसमें कहीं कुछ लोग डिफरेंस भूल जाते हैं कि ये मेरे एक अलग वर्ल्ड है और ये एक अलग वर्ल्ड है. तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए वो नहीं करें? आई मीन डूज एंड डोंट्स. सो आई वुड से आइडियली, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप सेम रहते हो एक जगह तो आपके दिमाग में ये डूज और डोंट्स वाली फीलिंग नहीं आती. बी नेचुरल, बी योर ओन सेल्फ वाला फैक्टर आता है. बट इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि यू शुड नॉट कीप ऑन ओवर बूस्टिंग योर सेल्फ. ओवर प्रमोशन ही ना करते रह जाओ आप अपने बारे में. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्टेंट एनीथिंग एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ. दैट डजंट, आई फील, हैपन्स इन वेल. Second area is be open to feedback. Yes. Social media platforms, there are always two-way communication. If somebody comes in, आप उसको block कर दो, आप उसको हटा दो, message delete कर दो, that is not the right way to happen. You should have that courage to handle that situation and be open to it. So true. So बट मुझे एक चीज़ लगती है कि आपने जैसे बोला कि करेज, बट लोगों को नहीं पता ये करेज लाएं कहाँ से एंड कैसे. एंड एक और चीज़ होती है, सोशल मीडिया पे आप सारे पोस्ट लाइक करते हो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सारे पोस्ट लाइक करना, सारे पोस्ट रीशेयर करना, रीपोस्ट करना. सो दे कंसीडर एज देयर पर्सनल ब्रांडिंग इफ यू आर शेयरिंग और रीशेयरिंग. इज दैट द पार्ट ऑफ? See, there is no harm in doing resharing or repost any of those sites. वो it is completely aligned. एक individual का style होता है. You have an option of reposting with your own thoughts. तो आपके personal branding के बाद में जब आप सोचते हो ना, तो आपको सोचना है what is your call for action. आप क्या चाहते हो कि यार इसके जाने के बाद वो मेरे से connection बना LinkedIn पे, या अगर आपका business है तो वो मेरी website visit करे. आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हो तो वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करे. सो दैट कॉल फॉर एक्शन दैट इज नीडेड फ्रॉम योर पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस इज ऑल्सो शुड कम आउट अ लिटिल मोर विजिबल. एंड द मोर सटल इट इज, द मोर इनडायरेक्ट इट इज, द बिगर द इम्पैक्ट इज. करेक्ट. मुझे लगता है हमारा ये डिस्कशन देखने के बाद आज बहुत सारे लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल तो अपडेट करेंगे. एंड आई वुड सिंसियरली अर्ज, जो भी कर रहे हैं प्लीज़ हम लोगों के साथ कनेक्ट करें एंड हमें बताएं इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल. ग्रेट. सो आई थिंक Kanupriya, it was wonderful discussion with you and you have given amazing insights of like hirings, personal branding, social media. बहुत मज़ा आया. If you don't mind, can we just have a small rapid fire round with you? Oh my God. So you're going to put me on the spot. But do I get a hamper at the end? Yes. Okay. You're going to get this. So, Yeah. your favorite social media portal? LinkedIn. Your red flag in any applicants? A red flag. Somebody who comes completely unprepared.
who doesn't even know anything about the company and बस उठ के interview देने आ गए. And what is your green flag in any applicants? Punctuality. Okay. That one skill which you suggest everyone should have. I'll go with a little non-traditional. I think curiosity. Okay. आप इस क्वेश्चन पे मेरे को मारोगे? How many times you said, I'll get back to you? Oh my. How much? What duration are you asking? In a week? In a month? Let's Can say, I get back to you on this? Good one, good one. Yeah, you can. So, like, based on the personality, you hired a person, you haven't checked the hard skills. Nah. Never? So again, very important factor it is picked out. Personal branding, ये personality, they create your first impression. But at the end of it, your hiring happens on your content, your substance. First impression is important, but it is not everything. So powerful. Thank you so much. It was lovely talking to you, and it was amazing, amazing, insightful discussion with you. Pleasure was all mine. I thoroughly enjoyed it. Thank you.